Now let us hear from the rising star of the Space Science Department, a curious mind fueled by wonder and ambition, a junior year student who believes in thinking beyond the atmosphere and dreaming beyond limitation. Please welcome with me, Roshaan Nadeem. My name is Roshaan Nadeem and I'm an amateur astrophotographer. So what I do is I take pictures of the stars, planets, the universe essentially. तो मेरा जो astronomy के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो काफ़ी पुराना है. So it started back when I was in grade 5. मैंने अपने स्कूल में एक टेलीस्कोप से, एक सोलर टेलीस्कोप से सूरज को देखा और उसके बाद मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक हो गया. बट मेरी एस्ट्रोफोटोग्राफी जर्नी कुछ साल बाद स्टार्ट हुई जब मैंने अपना टेलीस्कोप खरीदा. एंड I've been doing astrophotography for the past 8 years. Basically, my talk is all about astrophotography, and astrophotography is everything visual. I'll be showing you guys some pictures that I've taken over the past many years. और उनके साथ मेरी क्या-क्या memories हैं, उनके साथ क्या-क्या stories हैं, and how I developed a connection with the universe. So it's more like a personal journey, but while talking about my personal journey, I'll be talking about how I developed a connection with the universe while taking pictures of the universe. तो जब मैं grade 7 में था तो मेरी मैंने अपना स्कूल का astronomy club ज्वाइन किया था. And my teacher asked me to paint a painting of my favorite nebula जो night sky में. और मेरा favorite nebula जो है, so a nebula is basically a cloud of gas and dust in space. तो मेरा जो favorite nebula था वो Horsehead nebula था. तो there's this nebula in space जिसकी शक्ल जो है वो एक घोड़े के सर जैसी है. तो I was very intrigued by it और मुझे वो बहुत पसंद था and I made a painting of it. So I'd love to show that painting to you guys if we can get the slides over here. But when I made that painting, I didn't know कि ये मेरा एक Kairos moment होगा, क्योंकि इसके बाद that painting was actually gifted to some representatives of Lahore Astronomical Society और वो painting अब मेरे पास है भी नहीं. But I'm glad कि मेरे पास उसकी एक picture मौजूद है because now that I look back, मेरे लिए वो painting मेरी journey में एक बहुत significant part play करती है. तो I painted the Horsehead Nebula और मेरी dream थी कि मैं उस painting को कभी experience भी कर सकूं. उसकी actually मुझे उस time ये नहीं पता था. I wasn't really that much into astrophotography, astronomy. उस time पे मुझे इतना ज़्यादा knowledge नहीं था कि मुझे ये पता हो कि अगर मेरे पास टेलीस्कोप होगा भी तो भी मैं इसको अपनी naked eye से नहीं देख सकता. I would need some cameras and I would need to use some astrophotography techniques to actually visualize and to actually experience this deep space nebula. But there was this dream of young Roshaan who was in grade 7 back then कि मैंने किसी दिन Horsehead Nebula की तस्वीर लेनी है या मैंने कभी किसी दिन उसको experience करना है. बट उस टाइम ये एक ड्रीम ही थी और मुझे नहीं पता था कि इस ड्रीम को मैं फुलफिल कैसे करूँगा. 2018 में मुझे एक टेलीस्कोप गिफ्ट मिली एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स थ्रू दैट टेलीस्कोप. हालांकि ये मेरा गोल नहीं था. आई हैड नेवर इंटेंडेड टू टेक पिक्चर्स थ्रू अ टेलीस्कोप. मुझे मेरा टेलीस्कोप लेने का शौक था बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उस टेलीस्कोप को यूज़ करूँगा तस्वीरें लेने के लिए. वो इनएडवर्टेंटली मैं टेलीस्कोप के थ्रू तस्वीरें लेना शुरू हो गया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि when I looked at the planets, when I looked at the moon, I was so fascinated that I wanted to show, and I was so excited that I wanted to show it to everyone else as well. कि आज मैंने ये देखा है. I wanted to show it to my parents, I wanted to show it to my friends, I wanted to post it online. तो मुझे बहुत शौक था कि मैं सबको दिखाऊं कि मैंने आज क्या देखा है. तो हर रोज़ जब मैं तस्वीर लेता था फिर अगले दिन मैं दोबारा सेटअप करता था, फिर मैं दोबारा ऑब्जर्व करता था कुछ और फिर मैं अगले दिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं कल से बेहतर तस्वीर लूँ आज. तो वो मुझे पता भी नहीं लगा और मैं एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहा था. और ये जो मेरी एक वो कोशिश होती थी कि मैंने आज बेहतर तस्वीर लेनी है कल से, वो एस्ट्रोफोटोग्राफी का सारा प्रोसेस था और मेरी एक स्ट्रगल होगी कि मैंने अपनी तस्वीरें जो है वो इम्प्रूव करनी है. खैर जो मेरी सबसे पहली तस्वीरें आई वो बहुत फजूल थी ऑनेस्टली. उसको हम देसी एस्ट्रोनॉमी की टर्म अगर यूज़ करें तो हम उसको कहते हैं मटर का दाना. तो फॉर एवरीवन हु माइट वांट टू गेट इनटू एस्ट्रोफोटोग्राफी, लोग समझते हैं कि अगर हम एक टेलीस्कोप ले लेंगे
तो हम जो है वो उससे नासा जैसा जुपिटर देख सकेंगे, हम उससे सैटर्न, हमें उसके बड़े बड़े रिंग्स नजर आएंगे। बट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं होता, और आपको अपनी एमेचर टेलीस्कोप से यू सी नथिंग मोर देन अ मटर का दाना। तो वो जो मटर का दाना है, दैट्स अ रियली बिग टर्न ऑफ फॉर सम पीपल हु गेट इनटू एस्ट्रोफोटोग्राफी, और उससे वो डिसअपॉइंट होके वो क्विट कर देते हैं अपनी हॉबी या अपना पैशन। बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। I wasn't just pointing a camera or my telescope towards space. I wasn't just pointing a lens towards the night sky. I was actually trying to start a conversation with the universe. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, and I knew कि ये एक जर्नी होगी। और बेशक मेरी शुरू की तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी they were terrible, and I would really like to show you my मटर का दाना images over here, if we can get them over here. But over the next many years, I joined societies, I joined different forums, मैंने YouTube से बहुत कुछ सीखा, I learned from different individuals, और मैंने अपने आप को as an astrophotographer develop किया। और फिर मुझे पता लगा कि अच्छा मैं astrophotography कर रहा हूँ। जब मुझे पता लग गया कि मैं astrophotography कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं astrophotography कर रहा हूँ, तो फिर ज़रा इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया, and then I started taking better images। और फिर अगर हम कंपैरिजन करें मटर के दाने का, वो मटर का दाना जो है वो एक्चुअली एक सेब बन चुका है। तो जुपिटर जो पहले मुझे इतना सा नजर आता था, मेरी पिक्चर्स में इतना सा होता था। Yes, so this is a painting of the Horsehead Nebula that I painted back in grade 7. तो as you can see कि इसमें वो एक थोड़ा सा घोड़े का सर आपको नजर आ रहा है। So I didn't know how to paint back then, but yeah, थोड़ी सी कोशिश की थी। If you can go to the next slide. Yes, this one. So here you can see, towards the left of the screen, you can see those matar ke dane that I'm talking about. So these were my very first images. On the right, you can see the Orion Nebula. It's a nebula in space, जो कि मेरी पहली image है उस nebula की. Again, next slide if you can go to it. Yes, and then next. So here's how my recent image of Jupiter looks like, and you can see there's a comparison कि पहले वो मटर का दाना जो है वो कितना बड़ा हो गया। तो that's what I call progress। And next slide। And then I took some images of deep space objects as well over time। मुझे obviously काफ़ी टाइम लगा इन images को कैप्चर करने में। ये कुछ clusters हैं, कुछ nebulas हैं, which I always wanted to photograph, which I always wanted to experience, लेकिन मुझे कुछ टाइम लगा इनकी तस्वीरें लेने में। And then फिर इसी तरह से मैंने 2022 में जाके अपना सोलर सिस्टम फैमिली पोस्टर बनाया खुद, using my own equipment, and I had a great sense of accomplishment about it because मैंने ये सारा कुछ अपनी एमेचर टेलीस्कोप से किया, अपने फ़ोन के कैमरे से ये तस्वीरें मैंने ली यूजिंग अ वेरी बिगिनर लेवल टेलीस्कोप। तो इसमें सारे 7 planets हैं, एक्सक्लूडिंग अर्थ ऑफ कोर्स एंड एक्सक्लूडिंग प्लूटो। आई एम सॉरी इफ एनीवन वाज हर्ट बाय दैट, वी डोंट कंसिडर प्लूटो प्लैनेट, वरना मैं प्लूटो को भी ज़रूर डालता इस फैमिली पोस्टर में। बट दिस इज एवरीथिंग, एवरी मेजर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम दैट यू कैन सी ओवर हियर। फिर मुझे थोड़ी सी रिकग्निशन भी मिलने लग गई। आई गॉट फीचर्ड ट्वाइस इन दी एस्ट्रोनॉमी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन। मैं उसमें 2 दफ़ा शॉर्टलिस्ट हुआ। उस कॉम्पिटिशन में मेरी एक तस्वीर उनके पीपल्स चॉइस अवार्ड में सेकंड प्लेस पे भी आई, व्हिच गॉट फीचर्ड इन द फोर्ब्स मैगजीन दैट यू कैन सी ओवर हियर। और उसके बाद जो है मुझे इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे भी मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मैंने वो कॉम्पिटिशन्स विन भी किए। लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी कि इमेज ऑफ द वीक में मैं काफ़ी दफ़ा फीचर हुआ। बट दिस वाज नॉट द एंड गोल। मेरे लिए ये एक गोल नहीं था कि मैंने अगर एस्ट्रोफोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये नहीं था कि मैंने एस्ट्रोफोटोग्राफी इसलिए करनी है कि मैं ये सारे एक्कोलेट्स कलेक्ट कर सकूँ। मैंने जैसे पहले बताया कि आई ट्राइड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। तो मेरा गोल ये था कि मैं उस कन्वर्सेशन को कैरी ऑन करूँ एंड मतलब उस कन्वर्सेशन को मैं परस्यू करूँ, बिकॉज दैट मैंने एस्ट्रोफोटोग्राफी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी ये सारा कुछ शुरू इसलिए किया था क्योंकि मुझे स्पेस का शौक था, मुझे देखने का, ऑब्जर्व करने का, एक्सप्लोर करने का शौक था। एंड दिस वाज नॉट व्हाट लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिकग्निशन मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर is that this was not the end product, and that is
the time when I started to realize about my place in space, about our place in space. So, being an astrophotographer, मैंने बहुत सारी galaxies की तस्वीरें ली थी, which were very distant, which were very far away. But मैंने कभी अपनी home galaxy की तस्वीर नहीं ली थी. I had never taken the picture of the Milky Way galaxy, जो कि हमारी अपनी galaxy है, जो कि हमें रात को dark sky से आसानी से नजर भी आती है. उसकी वजह ये है क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और लाहौर में बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन है और लाइट पोल्यूशन जो है वो एनिमी है एस्ट्रोफोटोग्राफर्स की. जैसे कि अभी ये लाइट्स जो हैं ये मेरी एनिमीज़ हैं क्योंकि ये मेरी पिक्चर्स का कॉन्ट्रास्ट ख़राब कर रही हैं. सो लाहौर जो है वो इट इज़ फुल ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड आई नीड टू गो टू डार्क स्काइज इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द मिल्की वे गैलेक्सी. So I planned a trip up north. So this is me, by the way, and there's the Milky Way galaxy rising behind me. So this was my first experience of observing the Milky Way galaxy. This is a few kilometers away from the Rakaposhi base camp. और जब मैंने पहली दफ़ा Milky Way को देखा, I was speechless. I still am speechless about that very moment because it was a lot. It was really a lot because. What I saw was that there were innumerable stars rising in front of me, which were enriched in cosmic gas and dust. Like I saw this fuzzy patch rising in front of me, which was it was unmistakable. कि वो Milky Way galaxy मतलब वो आपको नजर like I know guys I might sound very weird right now क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किसी ने किया होगा अगर नॉर्थ में आप लोग गए हैं. बट टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन वाज एब्सोल्युटली इमेंस. तो जब मैंने मिल्की वे को देखा, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑब्जर्विंग इट अगेन फ्यू इयर्स लेटर स्कर्दू से. It felt like an arch above my head. Like it was like so strange, and I felt so tiny. I felt so insignificant in front of all those stars. A man on a tiny planet just standing in awe of the Milky Way galaxy. Or my camera was capturing the light and I was just staring at the sky. I have had the privilege of traveling to the darkest skies of Pakistan in Balochistan. Taqwa Space Observatory है Balochistan में. And I've been there. और वहाँ पे भी बहुत dark skies है. तो जब मैं उन dark skies पे गया, तो what I used to do was obviously I used to do astrophotography, but apart from that, मैं अपनी कुर्सी रख के I used to sit there and just used to stare at the stars. And when you stare at the stars for too long, they start staring back. Metaphorically, of course. Well, हो सकता है सच में भी हमने aliens को तो rule out नहीं किया, हो सकता है वो वहाँ से भी हमें देख रहा हो. But yes, in that very moment, when you're under a sky full of stars, in truth, so you do feel insignificant. और उसके बाद मैंने yes, so here you can see this is a galaxy very similar. Of a very similar shape to our galaxy. इसका नाम है Bort's galaxy. So this galaxy, so basically what happens is that light takes time to travel across the universe. जिसको हम light year कहते हैं. जितना साल light को जितना time light को लगता है एक साल में travel करने में. So this galaxy is actually 12 million light years away. So light takes 12 million years to travel from this galaxy to us. And if you could click next. And this is a cluster of galaxies. So on the left you can see one galaxy and then on the right hand side you can see a cluster of galaxies. So these are a lot of galaxies clustered together. तो ये जो right side में आपको जो galaxy का cluster नजर आ रहा है, it took actually 62 million years. यहाँ से light आने में 62 million years लगते हैं. Because it is 62 million light years away. So what blows my mind is that the universe has existed for about like 13.8 billion years. और some of the light that I captured from my camera is actually older than humanity. Like, it's not a metaphor. ये actually physics है कि light कुछ जो आ रही है 62 million years पुरानी जो है वो कितनी पुरानी light है और उसको अब हम जो है वो capture कर रहे हैं. हम अब उसको observe कर रहे हैं. Let me just very quickly talk about the reunion. I talked about that Horsehead Nebula at the beginning. So here's my redemption of the Horsehead Nebula.
I was actually able to fulfill my dream last year from the darkest skies of Pakistan, from Takwa Space Observatory. I had to wait a lot for it. I had to wait for the journey. I had to wait a lot of while to actually capture this favorite object of mine. But the journey was worth it, and everything was worth it. So what I'm trying to tell you guys over here is, if you could go to the next slide, कि एक चीज़ मैंने जो अपनी सारी जर्नी में लर्न की वो ये थी कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं बहुत ज़्यादा। Insignificant से मुराद ये कि we in a sky full of stars, under a sky full of stars, we're so tiny, we're so small, but yet we're able to look up and observe. We're able to look up and wonder. It is amazing that we can look up and wonder at the sky. So इस cosmic perspective से हमें क्या मतलब लेना चाहिए कि how should we soak it in? हमें इससे क्या take away क्या होना चाहिए? Maybe there is nothing जो हमें actually इससे समझना चाहिए. Maybe we should only just feel it कि we're a part of something much bigger than ourselves. So a very interesting thing is कि हमें छोटे होते हुए point पढ़ाई जाती है, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. तो इस सारी journey में I really understood the true meaning of that point, and I would like to share it with you guys. So twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Giant thermonuclear reaction held by gravitational attraction. As you burn through constant fusion, your twinkle is just an optical illusion that happens when your light gets near, distorted by an atmosphere. Twinkle, twinkle, little star, now I know what you are. So by doing astrophotography, I was able to truly connect with the universe, and I would like to inspire you guys. I would like to advocate for this कि आप लोग भी advocate करें dark skies के लिए. Plan a trip up north, क्योंकि यहाँ से तो नहीं नजर आते सितारे. जाके सितारे देखें, अच्छा feel करेंगे आप. Or you'll truly connect with nature. And I would like to finish off with this famous saying from Neil deGrasse Tyson, who said, and I quote, "We are stardust brought to life, and then empowered by the universe to figure itself out, and we've only just begun." Thank you so much.